Thank you so much, Dr. Kohli, for that valuable analysis today. We're shifting focus now. Delhi's air quality has dipped back to the severe category as the city woke up to a dense blanket of smog, with the 24-hour rolling average AQI reaching 391 at 8 a.m. A sharp rise from 374 recorded at 4 p.m. yesterday. According to air quality analysts, a dip in wind speed has led to stagnation and accumulation of pollutants, worsening conditions across the capital. Among 39 air quality monitoring stations across Delhi-NCR, 16 locations registered AQI in the severe category. Let's in fact take a look at the current AQI readings across the National Capital Region. So you can see on your screens right now, the entire Delhi-NCR region seems to be in red, and why this is there is because all of this is in the severe to hazardous AQI index levels. So if we zoom in and let's go across first to maybe Ghaziabad, you will see Ghaziabad over here has AQI index from 561 in some places to 658 over here. This place in Ghaziabad has an AQI index of 658, and other places have 613, 634. Now if we move across to maybe Noida, Noida is also seeing above 500 levels over here. So sector 127, 128, 109 is seeing hazardous levels of air quality index. You have 505, 558, 558, 480, 611. These are all Noida AQI numbers that we are reading out to you. If we look at Central Delhi is supposed where all the measures are being implemented correctly. We still have Central Delhi reeling under 446 AQI. Over here, Central Park, over here, Indira Chowk, 536 viewers on your screens. This is the AQI index in Central Delhi, 490. India Gate, if you look at India Gate, it has 450 AQI, clearly very severe, unbreathable air, unlivable air and atmosphere over here. If we look at West Patel Nagar, we have 500 AQI, 675 in near Netaji Subhash Palace over here, 675 viewers. It's almost touching 700 AQI. There seems to be one area which is only at 398. However, if we again look at maybe let's look at Gurgaon, Gurugram is also looking at above 400 levels of AQI in most of its sectors. So 445, 433, 439, 458, 461, all of these areas, even in Gurgaon, DLF City phase 3 is looking at 445, 446. Those numbers are on your screens, viewers. This is the situation in New Delhi and the Delhi-NCR region. All the areas across Delhi, even Central Delhi, are in the red zone, are in the hazardous to severe category. Remember, only 0 to 55 is the good quality air that is supposed to be good. Then 101 to 200 is supposed to be poor quality air, and after that it goes into the severe and hazardous quality air. So those were the live numbers on your screens. We are joined by my colleagues who are joining us from various parts of the Delhi-NCR region. Aditya Vadhavan is joining me from Delhi, Ali Khan is joining me from Noida, Anil Chaudhary is joining me from Ghaziabad, and Gulshan Grover is joining me from Gurugram. I want to go across now first to Aditya to give us a situation of the ground in Delhi. Aditya, what's the situation on ground in Delhi? We are looking at live numbers. All of them seem to be over 400 and the average seems to be around 391. Well, absolutely, Shivani. Indeed, as you rightly pointed out, the entire Delhi is engulfed in a thick layer of smog and haze, and clearly, in various parts of Delhi,
the air quality index is hovering between above the 400 mark, which is very hazardous. And clearly now, since we are standing in the outdoor, we can face the itching in eyes and ears. Indeed, it is a very, very problematic situation. Every year, now this has become a routine that the stubble burning also happens at this hour, and also people start to face difficulties in breathing because the particulate matter 2.5, the concentration of PM 2.5 increases in Delhi's air, and year by year there have been no concrete steps, to tackle this pollution. However, we have seen as we have seen these such last year, that this year also the GRAP 1, GRAP 2, and GRAP 3 have been implemented across Delhi. However, it has borne no results as far as tackling pollution is concerned, and we are seeing an increase in the hospitalization. People are, the people who have asthma and bronchitis are the risk are the most at the risk most, because they and even I will just show you the visuals here. There are a smog gun, spraying water to control the pollution. So indeed, the situation is very, very tense at this juncture, and indeed, it needs to be seen, by when would the Delhiites get respite from this pollution, because the hospitalizations are increasing among the Delhiites. Yes, Shivani. All right, let me now go across to Ali Khan, who's joining us from Noida. Ali, हमने अभी लाइव ट्रैक किए थे AQI लेवल्स, और उसमें हमने देखा कि नोएडा में भी ऑलमोस्ट सारे जगह 350 से ऊपर था AQI. तो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? अब ग्रैप 3, 4 जो मेजर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो कैसे मेजर हो रहे हैं, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं. तो बता दूं कि आज का जो नोएडा का AQI है वो लीडिंग द चार्ज है कि ग्रेटर नोएडा आज टॉप कर रहा है पूरे दिल्ली NCR में. ग्रेटर नोएडा का AQI 450 के आसपास दर्ज किया जा रहा है. वहीं गाजियाबाद दूसरे नंबर पे और नोएडा तीसरे नंबर पे आता है. दिल्ली खिसक के चौथे पायदान पे पहुंच गया है. पर सडनली सर्ज जो है कल के बाद, कल जो AQI था नोएडा का वो करीबन 370 के आसपास था, पर आज करीबन 70-80 पॉइंट्स का ये सर्ज है. ये काफी बेहद जहरीला कर दिया है हवा को. अभी भी हम जिस टाइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खुद मुझे गले में खराश और आंखों में जलन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है. और ग्राउंड की अगर सिचुएशन की बात करूं तो ग्राउंड पे इस टाइम स्मॉग इतनी ज्यादा है कि विजिबिलिटी काफी लो है. आप पीछे तस्वीरों में भी आपको दिखाना चाहूंगा कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि स्मॉग की एक चादर अलग नजर आ रही है. आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्मॉग है इस टाइम आसमान में. तो लो विजिबिलिटी बेहद लो है, जिसकी वजह से जो पास की 100 मीटर की से कम की जो विजिबिलिटी है वो काफी लो नजर आ रही है. तो ऐसी तमाम समस्याओं से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है. वहीं जो आम तौर पे जो लोग हैं, जिन्हें लोगों को सांसों में, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं से ज्यादा सामना करना पड़ रहा है. तो वही डॉक्टर्स की सलाह है कि आप घरों से बाहर कम निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें. चश्मा लगाएं, वो ऐसा चश्मा लगाएं जिससे आपसे दोनों तरफों की आईज कवर्ड हो. ऐसे चश्मा लगाने की भी डॉक्टर्स के द्वारा सलाह दी जा रही है. और घरों से निकलने से पहले ठंडे पानी से आंख धोएं, और वापस अगर आप घर जब पहुंचते हैं तो फिर से दोबारा ठंडे पानी से आंखों को धोएं, जिससे आंखों में जलन कम हो पाए. To Gulshan Grover, who is joining us from गुरुग्राम. इन फैक्ट गुलशन, वहाँ पर क्या स्थिति है? लोगों को तो बच्चों के स्कूल को क्लोज कर दिया गया है. गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे ऑफिसेज वर्क फ्रॉम होम करें. गुरुग्राम में हमने देखा कि 300 से 400 के करीब AQI चल रहा है. तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 467 जो है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी बेहद खतरनाक श्रेणी में है. और कुछ ऐसे भी इलाके हैं गुड़गांव में जहां पर 500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया जा रहा है. तो फिलहाल जिस तरह आपने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जरूर शुरू कर दी गई हैं 5th क्लास तक, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से ग्रैप जो स्टेज 4 जो लागू है, उसके बाद सरकार ने तमाम उन स्कूलों को, प्राइवेट या सरकारी, कोई आदेश दिए थे कि क्योंकि ये जो बढ़ता वायु प्रदूषण है ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है, बुजुर्गों के लिए खतरनाक है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है. इसलिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा था, आदेश दिए थे. तो अब कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो अभी भी ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं. हालांकि अधिकतर स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस जो है 5th क्लास तक की ले रहे हैं. इससे खासकर एक जरूर कमी आएगी कि जो
बसें जो स्कूलों की होती हैं, सुबह सुबह हम देखते हैं कि बच्चों को लेने के लिए जो आती है, क्योंकि सुबह की जो हवा है वो बेहद जहरीली हवा है, इसलिए बच्चे उस हवा की सांस लेने से बच सकें, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू की गई हैं। हालांकि स्टेज 4 जरूर लागू कर दिया गया है। स्टेज 4 में जो भी पाबंदियां हैं, जो नियम प्रशासन की तरफ से बनाए जाते हैं, उन पर किसी भी तरह का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड स्तर पर नहीं नजर आ रहा है। निर्माण कार्य गुड़गांव में धड़ल्ले से जारी है, क्योंकि गुड़गांव में बहुमंजिला इमारतें काफी अधिक संख्या में बन रही हैं। इसके अलावा जो घरों के निर्माण कार्य हैं वो भी लगातार चल रहे हैं, उन पर किसी तरह की अभी तक कोई रोक टोक जो है वो नजर नहीं आ रही है। जी इसके अभी अलावा if I go across to Anil Chaudhary who is joining us from Ghaziabad. अनिल, वहाँ पर क्या है? यहाँ पर गुरुग्राम में कह रहे हैं कि निर्माण अभी भी सारी जो भी प्रोसेसेस है वो सब चल रही है, ग्रैप 3-4 की मेजर्स उतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। गाजियाबाद का क्या हाल है? वहाँ पर AQI हमने देखा सबसे ख़राब है, कोई एरिया में 600 पार है। वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली से सटा हुए इलाके में लोनी, जो कि बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है लोनी का, वहां पर 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और साथ ही वसुंधरा का भी यही हाल बना हुआ है। तो ज्यादातर गाजियाबाद के इलाकों में पोल्यूशन का जो स्तर है बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं, उसके बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो ग्राउंड जीरो पर जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। ये वजह लगातार यही वजह सामने आ रही है, क्योंकि जो अधिकारी लगातार काम करते हैं उस तरीके से, तो शायद पोल्यूशन पर कंट्रोल हो सकता था। पर जो अब जनता है गाजियाबाद की, वो बेहद परेशान है। ऐसे में कुछ लोग हैं, हमसे जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? Natasha. नताशा जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको पोल्यूशन से? As we are seeing that the pollution level has dropped to a dangerous level, it is affecting the children and the elderly people and also the people with breathing problems, and I think even the healthy adults. So we need the stricter actions from authorities, and I think the citizens also have to be responsible by reducing burning waste or by reducing the vehicle use and contributing to the clean air initiatives. I think clean air is not a luxury, it is a basic right, so we must work all together to protect it. देखिए, आप गाजियाबाद की जनता है वो इस दमघोटू हवा में सांस ले रही है। मजबूरी लोगों की बन गई है, पर लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकाला जाए। जी जो बिल्कुल। प्लान तैयार किया गया है उसको ग्राउंड जीरो पर लाने की जरूरत है, ना कि अधिकारी जो पेपरों में आदेश कर देते हैं वो आदेश जमीन पर नहीं दिखता है। जो अधिकारी हैं उस लेवल पर काम नहीं करते हैं। जी यही वजह बिल्कुल। भी I है want to thank all my colleagues who are joining us from various parts of the National Capital Region to give us an on-ground update of what the air quality index is like. However, let's also quickly look at how the farm fires are worsening across the Delhi-NCR region. Now, if we compare it to today and yesterday, this is Delhi, Haryana and Punjab over here. You can look at the number of farm fires which have increased as compared to yesterday, which is 18th November 2025. So, you can look at the number of farm fires, those in red. These are the number of farm fires that have been reported in Punjab, Haryana, and this is Delhi, which is seeing and bearing the brunt of the entire farm fire and the air that is coming into this region. And you can see how this has increased on 19th November. So now if we compare it, this is today versus yesterday. If we compare it to last week, this is what the screen looks like. So last week on 12th November 2025, still there were lesser number of fires that had been reported. However, today on 19th November, we can see that a lot of farm fires have increased in Punjab, in the Punjab region, and a little bit in Haryana as well, and Delhi is in fact bearing the brunt. Now, if we compare the farm fires to last month, how they were last month, 12th November 2025, you can look at the less amount of farm fires over here. Punjab had very few incidents, Haryana had very few, and Delhi in fact was seeing better levels of AQI. However, as we have been stating to you, it is crossing 400, 500 AQI levels because of the number of farm fires. You can look at the difference between
last month and this month. The number of farm fires in Punjab has increased significantly, and even some areas in Haryana. So that is why the air quality index is dipping in Delhi currently. When we compare it to last year, however, we have seen a reduction in the farm fires, and that's what the Delhi government has been maintaining, and that's what the data also shows. Over here, look at that, almost the entire region of Punjab has been involved in farm fire incidents, but this year this has reduced significantly, and even in Haryana and Haryana region, we can see that these farm fire incidents have reduced as compared to last year. So this is what we look at when we are comparing the AQI index as compared to the farm fires that have been reported from across our neighboring states. All right, that's it from us on this bulletin. We will see you after this short commercial break.